Hello everyone, welcome back to my channel. So, in the last class, I was teaching you about SAP Enterprise structure, and I have mentioned that from here the configuration starts. So, while explaining after completing my recording, I felt that there was some technical glitch because of which I couldn't able to record the last few of the topics which I was explaining you. So this will be in continuance with the previous class only, where I have explained you, if I remembered, I have explained you about how we have to configure company code, what are the business area, and the where are the plants situated, and for doing or defining any company code, we have to follow the transaction code. Either we can follow the transaction code or we have to follow the path, right? So now I will show you how the SAP software or the server looks like. So once you install your SAP, there will be icon similar to this, like it will be exactly in this way. So we call this as a logon pad or graphical user interface. Yeah. So this is known as graphical user interface. We have to like double click on it in order to open the SAP server. So let me do one thing. So once you double click on the logon pad or the logo of SAP server, you will come into this interface, how the SAP server looks like. And on double clicking this, once you double click on it, so after double clicking it, this is the interface how SAP looks like. Here you can see we will be working on the version ECC 6.0. ECC is what? Enterprise Central Component, and this is Enhancement Package 7. I have explained you what is client. It is like the central point. It is the highest hierarchy of any SAP system. So R is like three-digit integers. We will be working in at 800. And under this client, there will be various configurations related to company code, and various other fields. And not only confined to FI module, but also other modules. तो ये ऐसा है, and here in the user you have to give your username and the password. So all this installation, the username, password is being given by our technical team. They create it and they allot it to us, like with our name and with the password. Yeah, later we can change the password as per our requirement, but everything from installation till we start accessing it, entire help is being given by our technical team. So, so after using your username and password, ये पेज ओपन होता है, ठीक है? तो इसमें है ना, ये जो है ना, ये वाला पार्ट where we can see the SAP menu and all these various folders. So ये किसके लिए काम आता है? ये वाला जो सिस्टम है ना, ये क्लाइंट यूज करते हैं, मतलब जो एंड यूजर है ना, वो यूज करेंगे अपने लिए जब वो खुद एक्चुअल में when they will start using SAP in their system. So for doing their day-to-day transactions and activities, they will use this प्लेटफॉर्म, ठीक है? अगर से आई गिव यू एन एग्जांपल कि अगर उनको सपोज इनवॉइस पोस्टिंग ही करना है, ठीक है? तो व्हाट आर्स इज अकाउंटिंग पार्ट. सो वी विल they will click on accounting, then as is finance, they will click on the financial accounting, and since invoice is what?
It's part of vendor, part of account payable. So they will click here and here you can see, right, the document entry. So from here, they will do the invoice posting. But these things are only accessible once we do our job. Like when the consultant do the entire configurations and when they hand over the platform, the SAP server get live into their system, the client system, then they can use this platform और this area for their day to day activity. But इससे पहले हमें क्या करना है, हमें कॉन्फ़िगरेशंस करना है, राइट? तो हम कॉन्फ़िगरेशंस देखिए, ये जो है ना ब्लैंक एरिया, इसको हम कमांड बॉक्स बोलते हैं. तो या तो हम इधर डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कोड लिख सकते हैं या फिर हम एक पाथ फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, अगर सपोज हमें कंपनी डिफाइन करनी है तो या तो हम ओ एक्स 50 करेंगे. This is the transaction code and we will press enter. So you will see here, from here we can create our company. ठीक है, या फिर हम एक पाथ फॉलो करेंगे. पाथ फॉलो करने के लिए क्या करना होता है, देयर इज एन एसपीआरओ. तो हमें एसपीआरओ कहाँ पे लिखना होगा, इसी कमांड बॉक्स में लिखना होगा. लेकिन अगर आप सिर्फ एसपीआरओ लिखोगे ना तो आप देखोगे कि वी आर स्टिल ऑन द सेम विंडो. तो अगर हमें एक विंडो से दूसरे विंडो में जाना है ना तो वी हैव टू टाइप स्लैश एन एंड जो भी फिर हमारा ट्रांजैक्शन कोड है. सो स्लैश एन एंड एसपीआरओ. तो वी विल गो टू द path. What is SPRO? SPRO is SAP Project Resource Object. ये एक हब है जहां पे हर मॉड्यूल्स के जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं ना वो सब स्टोर होता है. ठीक है, एंड स्टोर वो जो जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस या जो भी पाथ है ना वो हमें फॉलो करना होता है थ्रू दिस आईएमजी पाथ. ठीक है, आईएमजी पाथ क्या है, इम्प्लीमेंटेशन गाइड. मतलब कि ये जो एसपीआरओ मैंने मेंशन किया ना, ये एक आप कह लो कि ये एक इतना बड़ा हब है और जिसके अंदर हर मॉड्यूल्स के कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स है. लेकिन वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स हमें कहाँ से फॉलो करना होगा, इस आईएमजी पाथ से फॉलो करना होगा. और हम जब कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं तो हम क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं. तो अगर हमें सपोज इसमें अगर कंपनी को डिफाइन करना है, वी विल ओपन दिस पाथ, then we will go to enterprise structure because I'm teaching you enterprise structure setting. Then there is definition, and then we are the part of finance. We will open this financial accounting and see here we can define the company. सो इससे भी क्या हो रहा है, हमने जब ओ एक्स 15 किया था तभी भी ये सेम विंडो आया था और अभी हम अगर पाथ भी फॉलो करते हैं ना तो भी यही विंडो आ रहा है. सो इट्स ऑल ऑन यू वेदर यू वांट टू गो थ्रू पाथ और वेदर यू वांट टू चूज ट्रांजैक्शन कोड. आई प्रिफर ट्रांजैक्शन कोड बिकॉज ये ज्यादा इजी है. आप इजीली अपना कमांड बॉक्स में ट्रांजैक्शन कोड डाला और डालते हो एंड आपका वो विंडो आ जाता है. बट इट्स नॉट, इफ यू वांट यू कैन इवन फॉलो द एसपीआरओ पाथ. होप आई एम मेकिंग इट क्लियर. एंड देयर मे बी कंफ्यूजन इन यू कि ये इतने सारे ट्रांजैक्शंस कोड है वो याद कैसे करेंगे. इट्स नॉट नेसेसरी. विथ टाइम एंड विथ प्रैक्टिस दिस ऑल एंटायर transaction codes और path you it's get feed into your mind. आप continuous practice करोगे तो आपको ये जो सिस्टम है, ये सर्वर है, इससे आप बहुत ज्यादा फ्रेंडली और फेमिलियर भी हो जाओगे. एंड और जो भी ट्रांजैक्शंस कोड है वो भी आप इजीली याद कर पाओगे. ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को एक जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि किस तरीके से एसएपी का प्लेटफॉर्म दिखता है. वंस आई विल स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन इन द नेक्स्ट क्लास देन आई विल लेट यू नो कि और चीजें या इसमें क्या क्या फीचर्स है. राइट, सो एज ऑफ नाउ दिस आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू कि जो भी हम करेंगे एक्सप्लेनेशन मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे इट विल डन इन एसएपी प्लेटफॉर्म. ठीक है, नाउ
So this I have explained you. Yeah. Now just hold on. So this how the SAP we do our login and see. So here we can say like what are the configurations which one has to do in enterprise structure? We have to define the company. We can use the transaction code OX50 or the path SPRO path which I have shown you. Right? मैंने अभी आप लोग को एक SPRO का path के थ्रू भी यही किया था कि I went to SPRO then there was an implementation guide का एक बटन था उस पे मैंने क्लिक किया then from there I went to enterprise structure define definition of then financial accounting and then I have defined the company in it. Okay, so here is the process. After defining the company, we have to define the company code. As I gave you the example in the previous class that company के नीचे बहुत सारे subsidiary companies होते हैं, right? And every subsidiary companies in SAP is known from the company code. So हमें company code भी define करना होगा. Either we can type as OX02 or we can follow the path. We have to define the business area also. The transaction code is OX03 and either the path. You can follow either of one. Or and finally we have to assign. Now how we will know कि जितने भी जैसे मैंने आप लोगों को इसमें एग्जाम्पल दिया था ना कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि रिलायंस पावर रिलायंस कैपिटल या कोई भी और रिलायंस की जो सब्सिडरीज है वो इस रिलायंस ग्रुप कंपनी का पार्ट है वो तभी पता चलेगा जब हम ये कंपनी कोड को इस कंपनी के साथ असाइन करेंगे तो वी ऑल्सो हैव टू असाइन द कंपनी कोड टू द कंपनी तो इससे हमें एक कंसोलिडेट अगर हमें कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट भी चाहिए होता है ना तो आप इजीली मिल जाएगा वहां वाई क्योंकि वी हैव assigned this company code to this कॉमन कंपनी ठीक है ये कैसे होगा ये सब हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे नाउ इवन आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन हो सकता है तब तो उस हिसाब से बिजनेस एरिया को भी कंपनी से असाइन करना चाहिए बट नो business area we do not assign it to any company the reason behind is that it is a client level settings ठीक है so we do not assign the business area to any company code ठीक है now I will let you know a very simple example that why we do not assign business area to any company code. The reason behind is that let me give you a very simple example तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्यों हम business area को किसी company code से assign नहीं करते. Say for example, there is a company named Global Tech. ठीक है ये कंपनी है ठीक है इसके से इंडिया में एक सब्सिडरी कंपनी है और एक फॉरेन में भी सब्सिडरी कंपनी है ठीक है सो बोथ कंपनी जो सब्सिडरीज है दे विल बी एड्रेस्ड विथ ए कंपनी कोड फाइन नाउ ये जो इंडियन कंपनी है ना ये 3 बिजनेस एरियाज में डील करती है एंड व्हाट आर दोज बिजनेस एरियाज मैन्युफैक्चरिंग सेल्स सर्विसेज ठीक है लाइकवाइज ये जो फॉरेन की कंपनी है ये भी मैन्युफैक्चरिंग सेल्स और सर्विस में डील करती है दिस आर द बिजनेस एरियाज ठीक है अब क्या है हम क्यों बिजनेस एरिया को कोई स्पेसिफिक कंपनी कोड से असाइन नहीं करते सो दैट कि अगर से फॉर एग्जांपल ग्लोबल टेक को ठीक है कुछ रिपोर्ट चाहिए ऑन द परफॉर्मेंस कि हाउ द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज वर्किंग है ना ग्लोबली मतलब उनको ये देखना है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस एरिया है ये ग्लोबली कैसे परफॉर्म कर रहा है तो ये उनको कैसे पता चलेगा by combining the data from both India and also the foreign company, right? तो ये तभी पॉसिबल होगा ना जब हम ये कंपनी जो है कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी है जो कंपनी कोड है इसको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे इस कंपनी के साथ
अगर हम कंपनी कोड को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर हम बिजनेस एरिया को कंपनी कोड के साथ असाइन कर देंगे तो वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा ना, एंड देन द रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। लाइकवाइज इस केस में भी ऐसा ही होगा। लेकिन अगर हम असाइन ही नहीं करेंगे बिजनेस एरिया को किसी भी कंपनी कोड के साथ, तो सभी तो ये नॉर्मल है ना, ये सब कुछ ओपन है, नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर कंपनी कोड। तो इससे क्या होगा, जो हमारी मेन कंपनी है उसको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिएगी इन फ्यूचर में, सो ऑन ग्लोबल बेसिस उनको इजीली वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर सपोज इनको अगर सेल्स का भी ये जानना है कि कितना प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा है, सेल्स के बिजनेस एरिया में कितना प्रॉफिटेबिलिटी वो अर्न कर रहे हैं अक्रॉस द एंटायर कॉर्पोरेशन, रिगार्डलेस वो कौन से कंट्री में है, तो भी ये कैसे पॉसिबल होगा, तभी पॉसिबल होगा व्हेन वी डू नॉट रेस्ट्रिक्ट इट टू एनी कंपनी कोड। अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा इनको अक्रॉस द बॉर्डर कोई भी इंफॉर्मेशन लेने में। लाइक वाइज अगर इनको ट्रैक करना है कि इनके जो सर्विस बिजनेस एरियाज है उनमें क्या एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज है, उसको ट्रैक करना हो विदाउट वरिंग अबाउट कि क्या लीगल बाउंड्रीज है ऑफ द कंपनी कोड, तो इन सब अगर इतने सारे फ्लेक्सिबिलिटी एक ग्लोबल टेक को तभी मिल सकता है सो दैट उनका एक यूनिफाइड व्यू हो हर बिजनेस एरिया का, कि हर बिजनेस एरिया किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं अक्रॉस all the legal entity, है ना, so that they can make an internal reporting, प्रॉपर एनालिसिस कर पाए, एंड जिससे उनका एक मोर कंसिस्टेंसी और एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू हो, है ना, अपने बिजनेस एरियाज को लेते हुए अक्रॉस द ग्लोब। तो ये तभी पॉसिबल है व्हेन बिजनेस एरिया इज नॉट असाइन टू एनी कंपनी कोड, एंड एक्चुअल में भी ऐसा ही होता है कि हम बिजनेस एरिया को किसी भी कंपनी कोड से असाइन इसलिए नहीं करते कि हमें ग्लोबली कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम इसको रेस्ट्रिक्ट ना कर पाए, एक कंपनी अपने परफॉर्मेंस को अच्छे से इवेल्युएट कर पाए इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए, सो दैट आने वाले समय में वो और ज्यादा इफेक्टिवली कंसिस्टेंटली काम कर पाए और एक उनको कॉम्प्रिहेंसिव उनको आइडियाज और एनालिसिस मिल जाए कि कैसे वो survive कर रहे हैं in the competitive market. So in case if you come across anytime this question that do we need to link business area with company code, then the answer is no, business area is not assigned to any company code. It is a, because first you can give this reason if you want to give an example, and also it is a client label setting. क्लाइंट लेवल सेटिंग का मतलब ये होता है कि जब हम कोई कंपनी कोड से रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, कोई इट्स ए कॉमन, ये कॉमन है, किसी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इजीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन दे कैन गेट द इंफॉर्मेशन बिकॉज इट बिकम्स इजीली एक्सेसिबल। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय बिजनेस एरिया, एंड क्यों हम बिजनेस एरिया को किसी भी कंपनी कोड से असाइन नहीं करते हैं। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वेरी वेल अबाउट the SAP enterprise structure. In the next class, I will show you how the configurations are done in the SAP server. And from here, the configurations, there will be many configurations henceforth. And starting with define company, company code, the business area, and assigning the company code to company. So, this is for today's class. See you in the next class and good day. Thank you.